aspect, don't forget to acknowledge the author and the illustrator. Never forget to, because this is not your content and this is not free to use content. ये किसी और की मेहनत है जो आप अपने सेशन में यूज कर रहे हो. So please acknowledge the. So the wolf, the duck and the mouse. यहाँ से दिख रहा है सबको? Written by Mac Barnett, illustrated by John Clason. Yeah. Let's see what happened in the book. So we all know that there are three characters: wolf, duck and mouse. अब इन तीनों के साथ होता क्या है? Now, even if you have the publisher over here, you can acknowledge the publisher of the book as well. Plus, when you are talking to children, do tell them who's an author, who's an illustrator, who's the publisher, what they do with the book. So let's see. There's a mouse, there's a wolf. Early one morning, a mouse met a wolf. What do you think has happened? जब एक माउस एक वुल्फ से मिलेगा तो क्या होगा? डर जाएगा, भागेगा, और क्या होगा? बात करने लगेगा उससे. हाँ? उससे बात करने लगेगा. उससे बात करने लगेगा. उसके सामने मरने की एक्टिंग करेगा. उसके सामने मरने की एक्टिंग करेगा. मैम वो हंसेगा अपने मन में. वो हंस देगा. मैम दोस्ती हो जाएगी. दोस्ती हो जाएगी. हाँ, बोलो बोलो बोलो. हेल्प मांगेगा. सब यहाँ पे all of you are friend to mouse, right? वुल्फ भी तो कुछ करेगा, नहीं करेगा वो कुछ. सबने बताया माउस क्या करेगा, वुल्फ भी तो कुछ करेगा. मैम माउस को लेकर तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, बिल्कुल चैलेंज करेगा. ठीक है, चलो देखें क्या हुआ आगे. Let's see what happened. And he was quickly gobbled up. क्या हुआ? खा गया. वुल्फ ने क्या किया उसको? माउस को खा लिया. खा लिया. स्वॉलो कर लिया. Was the mouse eaten? नो मैम, स्वॉलो कर He लिया. was gobbled up. Now do you see there's a difference in the term, the verb that you are using for eating? So munching, eating, gobbling, swallowing, all are different verbs. Right? So I'm just telling you. You don't have to tell it directly to children. I'm just telling you. See, there's a difference here. जहाँ पे भी difference और gap मिलेगा, वहाँ आपको एक learning opportunity मिलती है. So, and he was quickly gobbled up. देखिए क्या हुआ, बेचारा माउस चला गया वुल्फ के पेट में. Oh, wee! Said the mouse. Oh, me! Here, I am caught in the belly of the beast. I fear this is the end. Be quiet! Someone shouted. I am trying to sleep. The mouse shrieked. Who's there? कौन है? अरे माउस है कहाँ? पेड़ पे है? पेट में है. किसके पेट में है? क्या है? पेट के अंदर क्या दिख रहा है? माउस. खाली है. अंधेरा है. मर गया है माउस? जिंदा है ना? तभी तो बोल रहा है. स्वॉलो किया था. राइट. बट कोई और भी है उसके साथ. कौन है? A light was lit. A duck lay in the bed. Well, said the duck. Oh, said the mouse. Is that all? Asked the duck. It's the middle of the night. The mouse looked around. Well, out there is morning. It is, said the duck. It's so hard to tell. I do wish this belly had a window or two. In any case, breakfast. Now, what is duck asking the mouse for? खाना खाओगे. The meal was delicious. What do you think mouse and duck ate for breakfast? What do you wait for dinner? Whatever wolf ate for dinner.
What do you think wolf ate for dinner? Mutton. Okay. मीट इतना बड़ा वुल्फ इतने से माउस से क्या ही हुआ होगा, तो और भी कुछ खाया होगा उसने. क्या क्या खाया होगा? कुछ दिख रहा है टेबल पे? ब्रेड अंडे दूध कुछ दिख रहा है टेबल पे? क्या क्या दिख रहा है? दाल भात जब वहाँ ब्रेड भी आ रही मैम ब्रेड जैम ब्रेड जैम कॉफी दिख रहा है. कॉफी भी है क्या क्या दिख रहा है? Okay, so now let's see what happened next. The meal was delicious. Where did you get jam? The mouse asked. And the tablecloth. The duck munched a crust. You would be surprised what you find inside of a wolf. It's nice, said the mouse. It's home, said the duck. You live here. I live well. I may have been swallowed, but I have no intentions of being eaten. Remember these lines? So that's what duck meant. That I was swallowed, but I had no intention to be eaten, so I'm alive and having my ब्रेकफास्ट Kala time of life. Right? For lunch, they made soup.